So, in this week's episode, I want to talk about three films that you guys can watch on Netflix. These are three lesser known films which are available on Netflix. So, my first recommendation is a film which is called Other People, which came out in 2016. So, I watched Other People last night on Netflix and I wasn't able to sleep when I finished watching it. This is a film starring Molly Shannon and Jesse Plemons. एंड इस फिल्म में दिखाया एक मदर की लाइफ दिखाई है जिनको कैंसर होता है एंड शी इज़ गोइंग टू डाई एंड बिकॉज ऑफ दैट हर सन हु इज़ अ राइटर कम्स बैक टू द होम टाउन टू टेक केयर ऑफ हर. सो जेसी प्लेमेंस वॉज द गाय हु वॉज अ सन एंड आई हैव बीन नोटिसिंग दिस गाय सिंस ब्रेकिंग बैड. इन्होंने ब्रेकिंग बैड में भी विलन का रोल प्ले किया था और ये ब्लैक मिरर में भी रिसेंटली एक एपिसोड में थे. सो दिस गाय हैज़ अ वेरी मिस्टीरियस tone to his body language which only adds layers to his personality. और इस फिल्म में इन्होंने एक गे मैन का रोल प्ले किया है. नाउ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस फिल्म वाज कभी भी इन दिस फिल्म द आइडिया ऑफ हिम बीइंग गे वाज नेवर शव्ड डाउन योर थ्रोट. बहुत ही सिंपली एक चीज़ को ऐसे दिखाया गया कि हाँ ये गे है और उसके अराउंड जैसी भी लाइफ है और उसकी लाइफ में भी नॉर्मल चीज़ें वैसी हो रही है जैसे किसी की भी लाइफ में होती हैं. So the creators are never asking you to sympathize with that guy. Similarly, the creators are never expecting you to sympathize with the dying mother. This film doesn't want you to cry. This film just wants you to show कि जब किसी के घर में कोई मर रहा होता है तो सब उनके अराउंड जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके अराउंड सब कुछ फॉगी कैसे हो जाता है. इट इज़ ऑल अबाउट द फॉग दैट गेट्स क्रिएटेड अराउंड द पीपल हु आर सफरिंग. एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दैट. इस फिल्म की राइटिंग एक्सट्रीमली फ्लूइड है एंड आई डोंट नो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब मैं किसी फिल्म को देख के मतलब आई वॉजेंट एबल टू स्लीप एंड अदर पीपल डिड दैट टू मी. जो भी सीन्स है लाइक द सीन्स देयर इज अ सीन इन विच जेसी प्लेमेंस हैज लाइक सेक्स विद हिज बॉयफ्रेंड एंड आफ्टर दैट ही हैज अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन विद हिम एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द मूवी. उसमें बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है बट येट आई लव दैट सीन. सिमिलरली मॉली शैनन का जो कैरेक्टर है हु इज़ डाइंग, बहुत कुछ मेजर डिस्कशंस होने होते हैं जब कोई मर रहा होता है तो उनसे वो डिस्कशन किए जा रहे हैं कि whether you would want to be cremated या आपका मतलब आपको बरी कराया जाए, would you like to donate organs after your death or not. And these are some heavy gravity discussions which are shown in the movie and how the father and the son are experiencing that, how they are gauging those reactions from her mother are shown very beautifully in the film. ये फिल्म एक slow burn के जैसे भी है, like this can be very comical also at times. And जैसे एक सीन है जो which is also one of my favorite scenes in the film in which Jesse Plemons goes to a supermarket to get some stuff for the home. In that scene he is looking for one particular item in the supermarket which he is not able to find, and since everything around him is going downhill, वो छोटी सी एक चीज़ जो उसको सुपरमार्केट में नहीं मिल रही वो उसके इतने सारे इमोशंस ट्रिगर कर देती है and he just sits in the supermarkets and he cries. It was one of the finest scenes I have seen in a long time. So this is my first recommendation for the week. So my second recommendation for the week is a short format documentary which is called Long Shot. Long Shot came out in 2017 और ये एक thriller है. This is the story of a guy who is accused of a murder he did not commit और उसको ये प्रूव करने के लिए उसने वो मर्डर नहीं किया, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक बेसबॉल मैच में प्रेजेंट था जहाँ पे 50,000 लोगों के बीच में ही वॉज प्रेजेंट देयर. दैट इज़ द ओनली वे पुलिस विल बिलीव दैट उसने वो मर्डर कमिट नहीं किया. अब ये इतनी फाइन थ्रिलर है कि इसके बारे में मैं कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू जम्प इन इट. बट आई हैव टू वर्ड्स फॉर यू फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री. दोज आर लैरी डेविड एंड अ शो बाय लैरी डेविड कॉल्ड कर्ब योर एंथुसियाज्म. सो something happens and you figure out कि ये thriller इतनी unique क्यों है. So this was my second recommendation for the week. My third recommendation for the week is a Netflix original called Calibre. This is a film that came out last year only. It is a thriller in which two guys go for hunting and something bad happens there and उसके बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है. इट्स अबाउट दैट. एंड ये फिल्म फेमस उसके बाद हुई जब स्टीफन किंग ने इस फिल्म के बारे में ट्वीट किया था कि हाउ इट इज़ सच अ फाइनली मेड थ्रिलर. एंड व्हेन स्टीफन किंग इज सेइंग हु इज़ लाइक वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ थ्रिलर्स दैट इट इज़ अ गुड फिल्म, इट मस्ट बी अ गुड फिल्म, राइट. सो इस फिल्म में पूरे टाइम एक बहुत ही सटल सी इनविजिबल टेंशन प्रेजेंट होती है विच इज़ लाइक गोइंग टू कीप यू ऑन योर टोज ऑल द टाइम.
and again, like, the less I tell you about this film, the better. So that is why I spoke the most about the first film, and because the other two films are thrillers, so I think I should not talk much about them. So these were the three Netflix recommendations I had for the week. Tune in next week for more recommendations. Thank you.